Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. ये वीडियो होने वाला है रेज्यूमे रिव्यूज पे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेज्यूमे जब भी आप अप्लाई करते हो कंपनीज में। क्यों? चाहे आप करियर पोर्टल पे अप्लाई करो, चाहे आप लिंक्डइन पे रेफरल मांगो, एक चीज आपको रिप्रेजेंट करता है, वो है आपका रेज्यूमे। अगर आपका रेज्यूमे सही से नहीं बना हुआ है एंड आप जितने भी टैलेंटेड हो, फर्क नहीं पड़ता है, आपको एचआर कॉल नहीं करेगी या फिर आपको लिंक्डइन पे बंदा रेफर नहीं करेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर रेज्यूमे शुड बी क्रिस्प and should speak about yourself in depth. So that is what I am going to speak about. So मैंने अपना जो ऑडियंस डिस्ट्रीब्यूशन है उसको दिमाग में रखते हुए इस वीडियो को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला, अगर आप कोई ऐसे हो जो इंटर्नशिप के लिए देख रहे हो, तो पहला रिज्यूमे होगा एक ऐसा बंदा जो इंटर्नशिप के लिए देख रहा है। सेकंड रिज्यूमे ऐसा होगा कि वो बंदा फुल टाइम रोल्स के लिए देख रहा है, लाइक ही इज अ फ्रेशर। द थर्ड वन विल बी कोई ऐसा बंदा जो 6 महीना एक्सपीरियंस या फिर 1 साल एक्सपीरियंस है एंड वो अभी स्विच करना चाहता है एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या फिर वो स्विच करना चाहता है। फोर्थ रिज्यूमे होगा कि लेट्स से उसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, नाउ ही इज ट्राइंग टू स्विच इनटू अ SD2 प्रोफाइल। तो इन चारों फेज का एक्सपीरियंस मेरे को अपने लाइफ में हो चुका है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को थोड़ा अलग बनाते हैं एंड टाइमलाइन से जाते हैं, सो दैट आप अगर कॉलेज में हो, आपको चारों टाइमलाइन का अच्छा खासा नॉलेज हो, सो दैट whenever you are working, whenever you are preparing, you have a decent idea about how your future should look like, so that when you are switching, you have all your data points and everything that you require so that you can build a proper and a strong resume. So make sure you watch all the 4 resume reviews if you're someone from college. So it's already 2:45 a.m. in the night. So without waiting or without wasting any time, let's get started. So while shortlisting these resumes, I did go through a lot of resumes. And one common mistake I found out was people do not have a lot of projects that align with industry standards. So if you're someone who's looking to create projects, Java is highly recommended. And for that, what you can do is you can check out the Java Full Stack Dev course by EduBridge, where you learn and develop real-time use cases with trending technologies with industry-based capstone projects in the Java Full Stack Development course. So it is a job guarantee course with 110% money back. The course is 100% online and spans for 453 hours. And at the end of the course, you'll be well versed with technologies like Angular, Java, HTML, Bootstrap, CSS, TypeScript, database, and SQL. Along with this, you'll also get a dedicated placement manager to support you in placements. You'll also get chance to interview at top MNCs, which will offer you salaries up to 10 lakh per annum. You can also get an assured scholarship of rupees 24,000 through their learn and earn facility. Also, you can secure your salary by using the Total Protect policy, which goes up to 1,20,000 benefits, and it is also available in zero cost EMI. So in the course, you'll also be getting an option to have 1:1 interaction with the industry experts, and you can build some amazing projects. So when I talk about the amazing capstone projects, it includes hospital management, inventory system using Spring, hotel reservation using Hibernate and Maven, website monitoring application, content management system, grocery delivery management system. So I'll be leaving the link in the description. Make sure you check it out and register for EduBridge's 110% money back job guarantee program in full stack Java development. With this, let's get back to the next resume. So पहला resume अनुज का है and बहुत बढ़िया। Graduation year लिख दिया है, gives me a clear cut idea कि बंदा 2024 में graduate करेगा, so obviously he's not up for full time roles. अभी ये internship के लिए देख रहा है, that is something which is very clear. CGPA 8.0 है, I'm assuming इसका CGPA 7.95 या 7.97 होगा, so it's rounded it off. That's very good. You can do that. Okay. यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम है, कोर्सेस लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर आप CSE लिख रहे हो सबको पता है, ठीक है, तो जरूरत नहीं है लिखने का। 10+2 का इसने लिखा है, 10 का नहीं लिखा है। अगेन वेल, लाइक क्लास 2 का लिखते हो तो काफी है, 10 का लिखने का जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल। एक चीज याद रखो, अगर 10 में 95% आया और 12 में 85% आया, तो आई विल रिकमेंड कि 10 का मत लिखो, क्योंकि फिर ना वो आपको इंटरव्यू पूछेगा कि क्या हुआ, आपका ड्रॉप क्यों हो गया था, तो इट माइट गिव अ नेगेटिव। ठीक है, लेट्स गो। पहला चीज, इंटर्नशिप के लिए बंदा दिख रहा है, तो मैं क्या देखूंगा इस पे? मैं 2 चीज देखूंगा। एक तो इसको DSA आना चाहिए, सेकंड इसके पास प्रोजेक्ट्स, मतलब इसने खुद पे काम किया, इसने प्रोजेक्ट्स बनाया। अगर मैं स्टार्टअप हूं तो DSA थोड़ा कम भी आएगा तो चलेगा, बट प्रोजेक्ट्स मेरे को चाहिए। अगर मैं MNC हूं तो मेरा DSA का थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस होगा, प्रोजेक्ट्स का अगर इसने 1-2 बनाया तो चल जाएगा। ऐसा सोच रहता है रिक्रूटर का, चाहे वो स्टार्टअप का हो चाहे वो MNC का हो। अब प्रोजेक्ट्स पे आया मैं, पहला न्यूज विकी है, प्ले स्टोर लिंक दिया हुआ है, गेटअप दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, सब कुछ लिखा हुआ है अच्छे से, बोल्ड में उसने बता दिया मेरे को कि देख ले भाई, मैंने ये यूज किया है, टेक स्टैक ये है मेरा, जावा का बंदा चाहिए, मैंने जावा प्रोजेक्ट करके रखा है, प्ले स्टोर पे लेंगे, गेटअप पे लेंगे, बहुत सही। सेम चीज इसने यहाँ पे किया है, सेम चीज इसने यहाँ पे किया है। तो जब भी प्रोजेक्ट्स लिखो, 2 चीज बहुत मैंडेटरी है, एक है अपना गेटअप का लिंक दे दो, सेकंड अगर आपका प्रोजेक्ट कहीं पे होस्टेड है, ऐप स्टोर हो गया, कहीं पे भी,
make sure you give it a link. Third चीज जो आप कर सकते हो, which can be an icing on the cake, is you give a YouTube video link, जहाँ पे let's say 2 मिनट का unlisted video link है, जहाँ पे you are explaining your project. हो सकता है मतलब कभी वो खोल के देख ले, but it does give a positive impression. ठीक है, बात बाकी बहुत अच्छे से इसने किया है. I'm getting an idea that इसका टेक स्टैक जो है, मतलब अगर मुझे इस टेक स्टैक का बंदा चाहिए तो I definitely can interview him, and in the interview then I can grill him on these projects. But the first tick mark or the check mark is done that this guy has done a lot of projects. Achievements, again, ठीक है, मैं प्रोजेक्ट से इतना इंप्रेस हो चुका हूँ कि मैं अचीवमेंट्स पे उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ. तो समझ रहे हो किस नजरिए से लोग देखते हैं. Let's come to the achievements section. So ठीक है, this is good. 5 star in hacker rank. Achievement नहीं है ये. कोई भी offline problem solving you should not write unless until it is very significant. 5 star in hacker rank आपको पता है कैसे मिलता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है. तो try to avoid this. लीड कोड के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, वहां पे कुछ रेटिंग लाओ, उसको लिखो. That will give a much better idea about your problem solving skills. या फिर कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, वहां पे कोई रेटिंग लाओ, वो लिखो. कुछ ऐसा करो जहां पे आपने 500 लोगों के साथ 5,000 लोगों के साथ कंपीट किया है, वहां पे आपने कुछ अच्छा रैंक किया. सो मुझे आइडिया लगेगा कि ये बंदों में भी कंपीट करके अच्छा कर सकता है. दैट गिव्स मी एन आइडिया अबाउट योर कॉम्पिटिटिवनेस. अगर अचीवमेंट्स लिख ही रहे हो समझ में, या फिर आप बहुत ज्यादा मेहनत किए हो, 500-600 सवाल किए हो, so to have a proof of it, you can just attach your lead code profile. That is also doable. But 5 star in hacker rank is something everyone knows how do you get a 5 star, because आज के जनरेशन में सब कोडिंग करते हैं, तो सबको पता है. Try to avoid this. ठीक है, बात बाकी for a startup tick mark. For an MNC अगर मेरे को रेफर करना होता तो I will not do it because I do not find you to be significantly good in DSA. So I might not refer, but a lot of people might. So this is something you should take as a feedback. Try to work on your DSA skills. Try to participate in lead code contests and attach ranks. That will give a positive idea about your competitive skills. और लास्ट में स्किल्स वगैरह सब लिख दिया है, अदर्स भी ठीक है. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी गुड फॉर अ स्टार्टअप. आप डेफिनेटली इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो बहुत जगह. थोड़ा डीएसए को ब्रश अप कर लो. अगर अमेजन वगैरह या फिर गूगल वगैरह या फिर ऐसे बड़े बड़े एमएनसीज में जाना है तो वो लोग देखते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता. दे हैव राउंड्स बेस्ड ऑन डीएसए. सो डीएसए बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है वो राउंड्स को क्रैक करने के लिए. सो यू हैव टू बी वेरी गुड एट डीएसए. ठीक है. सो द नेक्स्ट रेज्यूमे इज ऑफ आयुषी, 2023 ग्रेड. इंटर्न के लिए तो नहीं दिख रही है, फुल टाइम रोल के लिए दिख रही है. ग्रेजुएशन ईयर से पता चल गया. सीजीपीए भी बढ़िया है, कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, एंड नहीं चाहिए होता है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में योर प्रोजेक्ट्स, योर अचीवमेंट्स शुड स्पीक अबाउट योरसेल्फ. यू स्पीकिंग हैज नो वैल्यू, हैज नो सिग्निफिकेंस. ट्रस्ट मी ऑन दिस. प्लीज रिमूव दिस. इफ यू आर सेइंग आई एम फास्ट लर्नर, आई एम दिस एंड दिस, नो वन गिव्स. ठीक है. व्हाट पीपल एक्सपेक्ट इज क्या किए हो तुम, प्रोजेक्ट्स किए हो दिखाओ, डीएसए किए हो दिखाओ. दैट इज व्हाट पीपल विल लुक फॉर. पीपल विल नॉट लुक फॉर तुम क्या बोल रहे हो अपने बारे में. ठीक है. लेट योर रेज्यूमे स्पीक अबाउट योरसेल्फ. स्किल्स थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में इसको ऑर्गेनाइज करो. पर्सनल स्किल्स ठीक है डाले हो तो ठीक है. अचीवमेंट्स, विनर ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग 4th सेमेस्टर, आवर टीम वन फर्स्ट प्राइज. थोड़ा सा इसको आप और लिख सकते हो आपने क्या किया था. ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर. अब इस पे लिंक है, क्या कंट्रीब्यूट किया हो सके तो थोड़ा लिंक करो. मुझे देखना है आपने क्या कंट्रीब्यूट किया. आप लिखते क्या उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. आई नीड प्रूफ. समझ रहे हो. इफ आई एम गोइंग टू रेफर यू, आई विल click on multiple links to gather proof. You might be a contributor, but what have you contributed? That is very important. Solved 250 plus DSA problems. I will highly recommend. आज का जनरेशन में सब 400-500 लीड कोड तो करते ही हैं. तो to have an edge, I will recommend you people to go and give more and more contest on the platforms. जहां भी contest हो रहे दो. जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करो, बट कॉन्टेस्ट देना बहुत जरूरी है. क्योंकि whenever you go for an interview, the first round will be coding round. कोडिंग राउंड क्लियर करोगे तो ही इंटरव्यूज आएगा. एंड कोडिंग राउंड में टाइमर चलता है. जब तक आप टाइमर के अगेंस्ट कॉन्टेस्ट नहीं देते हो, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू टू क्लियर दोस कोडिंग राउंड्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रैक्टिस इन रेस्पेक्ट टू टाइमर. सो गो एंड गिव कॉन्टेस्ट एंड वहां पे कंपीट करो लोगों के साथ. कंपीट करोगे तो रैंकिंग्स मिलेगी. क्या पता है कि अच्छी रैंकिंग हो तो यू कैन ऑल्सो पुट दैट इनटू अचीवमेंट्स. सो ट्राई पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्टेस्ट मोर. दैट इज द फीडबैक दैट आई विल गिव फॉर यू. एंड अगेन ठीक है, 10 नहीं भी डालोगे तो चलेगा. प्रोजेक्ट्स आई विल नॉट कंसिडर देम. I do not find a link. As long as I do not find a link, your projects are baseless. And the other thing is, please stop adding all these projects which are very, very common. There are projects which are super common. You need to avoid it because nowadays everyone has access to YouTube. Everyone has access to everything. So if you're adding projects which are common, if I'm getting 10 resumes in a day and I find these things in 8 resumes,
I will consider you have copy pasted. I will not consider that you have put in your effort. So try to put in your effort, try to build something different. अगर e-commerce भी बना रहे हो तो उसको अलग सा नाम दो, अलग सा एक अपना स्टार्टअप काइंड ऑफ नाम दो, उसको बनाओ. E-commerce मत लिखो, उसको अलग सा नाम दो, so that I click, at least I go and see it. You have to attract me to see it. If you're putting something which everyone has put, that will not attract me to your resume. Got it? So that is the feedback that I'll give for your project section. Link and make something which will make me click it. And 4 projects never. कभी मत डालो यार, क्योंकि 4 प्रोजेक्ट्स आप खुद ही क्लियर नहीं होगे. एंड मैं अगर इंटरव्यूअर होऊंगा, मैं सबसे पुराना प्रोजेक्ट उठाऊंगा एंड I'll just grill you across. And if you're grilled, so you might end up failing in that interview. So it's very important to put your best 2 projects which you're very well prepared of. 7 प्रोजेक्ट कोई नहीं देखना चाहता. लोग देखना चाहते हैं 2 या 3, बट वो 2 या 3 तगड़े होने चाहिए. ठीक है, कोर्स वर्क जरूरत नहीं है. So that is what I will recommend for you. Will you get a referral from me? For MNC, no. For startups, you might not, because I don't find a link. I don't find proof of your work. So proof of your work is missing. Please focus on it, okay? So the next resume is of, I think, name fake hai, and graduation year ka hai. Okay, 2021. So someone who is into the industry for more than 1 year and he's now looking for a switch. Something that does catch my eye is the detailed thing that he has done. He's written everything in very, very detail, which is a very good quality. So if you're presenting your resume, it's very important wherever you're working, work experience, you write each and everything that you did in your work, every transition that you did. And something very important, you should give something like pointers. Okay, I did this in so and so days. I created so many things. I maybe reduced latency from this to this. You have to put numbers and you have to put your tech stack. You have to put your tech stack so that I get an idea what you work on. Got it? So very well written, very well written. And before that, he was at Cognizant. So he was there for not long. So if you're for 1 month and you haven't done anything, because in Cognizant, if you're for 1 month, I'm assuming you haven't done anything. So you can decide to omit it as well. Internships. Okay, this is good. You have done an internship. Okay, that's perfect. I'll not go into internship because what matters to me is your recent experience. Education, perfect. CGPA, perfect. Technical skills, very clearly written what he knows. So I get an idea if my requirement matches with you or not. Interests and achievements. Okay, perfect. Will I give him a go? Yes. For a startup or referral? Yes. An interview? Yes. Will I give him a go for MNC? No. DSA is missing. No matter how much experience you gain, if you're going for a switch, there will be coding rounds. There will be DSA rounds in MNCs, the bigger ones. So it's very important. You have to attach profiles. You have to give me an idea that you will be able to crack those coding rounds. Then only I will be giving you a referral. It doesn't need to be a Codeforces profile. Just your DSA coding profiles will do once you are into the industry, because once you're into the industry, you will not be competing with thousands. You'll just be given a coding round link and you have to clear it, and then you'll be getting an interview. Got it? Okay, the next resume is of Arush. When did he graduate? 2020. So 2.5 years of experience. Full stack developer. Okay. And this one is something I'm not a big fan of. You can remove it. And cool. Let's go across. Work experience. I'm working for a client named this. What will I do? What will I do if you're working for a client named this? What are you working at? You have to write. Please write it. So if you don't write it, this is vague. It doesn't matter to me. I need details. Next. Again, no mention. The previous resume had so much of mention and you have literally nothing. Please write it. This entire thing, work experience, could have been so much better, but you actually ruined it. Please focus on it. Again, going across CGPA, okay, fine. This is something, the more experience you gain, people will not look at your CGPA anymore. Okay, it has to be a decent one, like 7+ will work, even 6+ works, as long as you have a decent amount of experience. Technical skills, okay, projects, same. You have written everything, but I don't find a link. So shall I consider it? I might not. So remember, when you are into the industry and you are for 2.5 years, projects is something people will stop looking at. Unless and until you work in a service-based company, that is okay. People will look at your work experience. What are you working at? Because work is where you spend your entire day at. So I will look at, okay, this guy works 9 hours a day. What does he work? Because that is your primary skill. This is something which you should have, or which you would have done in your leisure time. So this is where
it's gone. It's done and dusted, and I will close the resume. That's very important that when you grow, when you have a decent amount of experience, you write pointers about your works like this guy has written. So if you're into the industry, note everything down that you are doing in your work, because that is what will be helpful when you are switching. So will I be referring him in an MNC? The answer is no, because I do not see DSA profiles and I do not see what has he worked on. Will I be referring him on a startup? No. The reason being, again, I am not sure what he has worked on. Does he have enough experience? Because it was lacking. Let's be honest, it was lacking. So please take it as a feedback and have your resume updated. So guys, I hope you enjoyed all the 4 resume reviews, and it is 3:07 a.m. in the morning now. And if you're watching the video till here, please do consider hitting that like button. If you're new to our channel, what are you waiting for? Do consider hitting that subscribe button, because I do keep bringing such valuable content to this channel. And if you haven't checked out our main channel, Take You Forward, what are you doing? Go and check it out and prepare DSA from there. And yeah, with this, I'll be wrapping up this video. Let's meet in some other video. Till then, bye-bye. Take care. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden.